हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी आप सभी लोग। यस एवरीवन। यस यस यस, अभी लाइव जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। यस वी आर लाइव। चलिए जी, सो लेट द मैजिक बिगिन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। बताइए जी। गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। I know it's difficult to do the पढ़ाई and all the things, but you have to do it. I know the tension जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, बट हमें पढ़ाई करते रहनी होगी, हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना होगा और मॉर्निंग के समय पर जितना हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। रात के समय पर जो भी बॉर्डर एरियाज में रहते हैं वहाँ पर उनको दिक्कत होती रहेगी ब्लैकआउट के कारण, है ना, मेनी मोर रीजंस। तो बच्चा पार्टी, लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को मैक्सिमम पढ़ाई अपनी अपनी करते रहना है, ठीक है। चलिए, so investment multiplier is based on the assumption that expenditure of one person is income of another. Is this true? Is this true? Yes. तो यहाँ पर है जी, ये क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? द आंसर इज यस, ये ट्रू है, ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू है। देन MPS is equal to difference upon difference of savings upon difference of income. Is this true? Marginal propensity to save. Marginal propensity to save is equal to change in the savings upon change in income. Change in savings upon change in income. Right? Right. Yes. So marginal propensity to save is change in savings upon change in income. Average propensity to consume, average propensity to save. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या ये सही है, क्या ये पार्टली सही है, पार्टली फॉल्स है या फॉल्स है? यस एवरीवन बता दीजिए। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। सेविंग फंक्शन इज अ डैश फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। सेविंग फंक्शन इज अ डैश फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। It is a increasing function. It is a increasing function, ठीक है। Increasing function. For straight line consumption function,
for straight line consumption function. MPC is dash. Yes. For straight line consumption function, MPC is constant. MPC is constant. ठीक है. Then, according to Keynes, there is a dash relationship between the income and the consumption expenditure. कौन सा रिलेशनशिप होगा? कौन सा रिलेशनशिप होगा जी? डायरेक्ट रिश्ता होगा, डायरेक्ट रिश्ता. Ratio of change in consumption to change in income. Ratio of change in consumption to change in income. Yes, it is marginal propensity to consume. ठीक है. APC is equal to change in consumption upon Y. APC is equal to change in consumption upon Y. Is this true or is this false? Is this true or is this false? It is false. It is false. It is false. It is false. ठीक है. Relationship between the total consumption and total income is defined by dash. Relationship between total consumption and total income. Relationship between total consumption and total income is average propensity to consume. Average propensity to consume. Dash refers to the proportion of income devoted to consumption. Dash refers to proportion of income devoted to consumption. Yes,
क्या होगा जी इसका? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिवर्टेड टू इनकम, इट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? Dash shows the relationship between different level of income and consumption. Different level of income and consumption. This is also propensity to consume. This is also propensity to consume. Propensity to consume. ठीक है जी. Keynesian theory of consumption function shows the functional relationship between the desired consumption and income. क्या बोल रही है? Keynesian theory of consumption function shows the relationship between desired consumption and income. क्या होगा? क्या होगा? तुरु 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 तुरु. Dash shows the relationship between the total desired consumption spending of the household and the factors that determine it. It is consumption function. It is consumption function. Consumption function. Dash is desired expenditure by households on the purchase of consumption goods. बताइए बताइए बताइए. बिल्कुल बेटा, कंजम्पशन गुड्स का है ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. द कंपोनेंट्स ऑफ aggregate demand in closed economy are the components of aggregate demand in the closed economy are dash. Both B and C. Both B and C. That is consumption expenditure, investment expenditure. Consumption expenditure and income expenditure. Closed economy. Closed economy has only exports, only imports, neither imports nor exports, both import and export. Yes, everyone. So closed economy has neither imports nor imports, exports. ठीक है? Actual demand equals desired demand. Actual demand equals desired demand at dash. Yes, 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 yes. Got it, everyone.
ओके, सो यहां पर होगा इक्विलिब्रियम। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव भी होता है ना? आ, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स तुमको नेगेटिव का कभी कभी ऑप्शन वो देते भी नहीं है ना? अगर वो नेगेटिव भी आया तो तुमको पॉजिटिव का ही आंसर आपको मैक्सिमम दिखेगा। बहुत ही रेयर केसेस में आपको ऑप्शंस नेगेटिव का दिया जाता है, बाकी ऑलमोस्ट तो वो होता ही है ना। क्योंकि यार हमको क्या देखना होता है, ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है, ठीक है? सो ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, या फिर इनकम इलास्टिसिटी में नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, राइट? Dash is the total amount of goods and services demanded in an economy. Aggregate demand, aggregate demand. Conclusion derived from Keynesian theory can be reversed. Conclusions derived from Keynesian theory can be reversed. Is this true? Is this false? Is this partly false? Or it is fully false? Yes, 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 yes. It cannot be reversed, right? It cannot be reversed. According to Keynesian theory, income and output in an economy depends upon dash. Income and output in the economy depends upon aggregate demand, aggregate supply, both A and B, and none of the above. Keynesian theory हिसाब से both A and B, that is aggregate demand and aggregate supply पे dependent होता है, ठीक है? Keynesian theory was developed in which year? कौन से साल में हुआ था? कौन से साल में? कौन से साल में हुआ था? डेवलप्ड इन विच ईयर? डेवलप्ड इन विच ईयर? 1936. 1936. The simple model of income determination in the short run dash. ये होगा बेटा Keynesian model. Keynesian model, right? Keynesian model. Right, right, right. Under C is equal to A plus BY, when B is 0.8, what is the value of two sector expenditure multiplier? मल्टीप्लायर का यहाँ पर आंसर क्या होगा? मल्टीप्लायर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना है और आपको मिलेगा आंसर आपका 5। आपको मिलेगा आंसर आपका 5, 5, 5। In the Keynesian cross diagram, the point at which the aggregate demand function crosses the 45-degree line indicates that level of full employment income less than full employment level of income equal.
चलिए 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 चलिए, अभी बैक अगेन। आर वी बैक अगेन? जल्दी से मुझे बता दीजिए। अब ठीक है, ओके। तो यहाँ आंसर सी था। अब इसका आंसर बताइए। If the autonomous consumption equals rupees 2000 and the marginal propensity to consume equals 0.8, if the disposable income equals 10,000, what is the total consumption? What is the total consumption? What is the total consumption? It's 10,000. It's 10,000, right? Easy, 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 easy. If the consumption function is expressed as C is equal to A plus BY, then A represents dash. A का मतलब क्या होगा? A का मतलब क्या होगा? Autonomous consumption expenditure. Autonomous consumption expenditure. Right? If consumption function is expressed as C is equal to A plus BY, then B represents dash. B represents dash. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. ठीक है? Marginal propensity to consume can be defined as marginal propensity to consume can be defined as yes, change in spending due to change in income. Change in spending due to change in income. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। According to Keynes, consumption expenditure is determined by dash. According to Keynes, consumption expenditure is determined by dash. Yes, it is determined by the amount of the disposable income that we have. It is determined by the amount of the disposable income that we are having, right? Keynes believed that an economy may attain equilibrium if the output only at the full employment level of output, below the full employment level of output, only at the prices, only if the prices are inflexible, and A and C above. हम लोग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। बिलो फुल इक्विलिब्रियम लेवल भी 45 डिग्री की जो लाइन होती है, बिलो फुल इक्विलिब्रियम लेवल भी हम लोग अचीव कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इन Keynesian मॉडल equilibrium aggregate output is determined by right, 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 right। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। इफ द national product is given at a market price, we dash the indirect taxes and dash the economic subsidy to get the national income। देखो यार, ये मैं हमेशा पूछता हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर गलत मत करना, ठीक है। इफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, मतलब आपको दिया गया है बेटा एनएनपी, we dash the indirect taxes and dash the economic subsidies to get the national income। तो अपने को चाहिए बेटा एनएनपीएफसी। क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। we subtract the indirect taxes and we add the subsidies। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 1500 and NFIA is 500, then NNP at factor cost will be dash। बताइए। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 1500 है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हजार होगा, हजार। यस, यस, क्योंकि ये टू अब्रॉड है, अब्रॉड। जनरली क्या होगा यहाँ पर, जनरली क्या होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ऐड करेंगे एनएफआई, लेकिन एनएफआई तो है नहीं अपने पास, नेट फैक्टर टू अब्रॉड है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये 1000 रहेगा। Income method is also known as income डिस्पोजल मत करना, मत करना। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, ठीक है। आप एक्सीडेंट कर सकते हो, यहाँ पर गलत हो सकते हो। इनकम इनकम देख लिया, तुक्का लगा दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 1000, सब्सिडी 50 है। जीडीपी एफसी क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया गया है वन जीरो फाइव जीरो। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इजी 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 गाइस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? GDP MP is equal to value of output minus intermediate consumption, NDP FC is equal to value of output minus intermediate consumption, GDP FC is equal to sales plus change in stock and NDP MP is equal to sales plus change in stock। तो यहाँ पर जी ये होगा आपका सही जवाब, ए वाला,
वैल्यू एडेड मेथड से कल ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था, आपको फॉर्मूला लिखवाया था और आपको न्यूमेरिकल भी करवाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको बताइए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो तो दिया ही नहीं है, तो बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट है। बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। द वर्ड ग्रॉस मीन्स, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? विच इंक्लूड्स डेप, विच इंक्लूड्स डेप डेप डेप। The word gross means includes debt. The difference between domestic income and national income is, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते हैं? कल हमने देखा था, रिवीजन में देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते हैं? एनएफआई को ऐड करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एनएफआई को ऐड करते हैं। ठीक 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 ठीक। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डैश, यहाँ पर गलती हो सकती है, बहुत सारे बच्चे इसको जीडीपी एमपी कहते हैं, गलत होगा आपका, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसका आंसर होगा एनडीबीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीबीएफसी। और अगर नेशनल इनकम बोला तो क्या होगा? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अरे यार वही वही क्वेश्चन आ गया। एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी करेक्ट। which क्वेश्चन आ गया? Depreciation expenses are included in dash। ऑब्वियसली डेप है तो यहाँ पर ग्रोस आएगा, ग्रोस। डेप है तो ग्रोस आएगा, ग्रोस, राइट। जहां पर डेप आ गया वहां पर ग्रोस आ जाएगा। डेप ग्रोस, डेप ग्रोस। Which one of the following is included in circular flow? Which one of the following is included in circular flow? Yes, 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 yes. Real flow, money flow, both. Right? राइट। ईगल्स कर्व क्या होता है? कल बता देंगे बेटा, कल पूरा की पूरा अपन करने वाले रिवीजन माइक्रो का, फुल माइक्रो रिवीजन करेंगे, फुल माइक्रो रिवीजन, ठीक है। जोरदार तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे, ठीक है कल, ठीक है। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस। जीडीपी में ऐड कर देंगे एनएफआईए को, जीडीपी में ऐड कर देंगे एनएफआईए को, तो हो जाएगा हमारा जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। Which of the following included enters the calculation of national income? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या होगा?
The value of the services that accompany the sale, the addition of the inventory of the final goods and material, the stock and bonds. स्टॉक बॉन्ड तो नहीं होता है, ए एंड बी जरूर होगा। स्टॉक बॉन्ड तो कतई ही नहीं होता है, कतई ही नहीं होता है, ए एंड बी जरूर होगा, ए एंड बी जरूर होगा, ठीक है। चलिए जी, which of the following does not enter into calculation of national income? Exchange of previously produced goods, exchange of second hand goods, exchange of stock and bonds, and all of the above. All of the above is the right answer. All of the above is the right answer. Which of the following is added to national income while calculating personal income? Which of the following is added to national income while calculating personal income? Transfer payment to individual, undistributed profits of corporate, transfer payment made to foreigners, mixed income of self-employed. पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। Which of the following is an example of transfer payments? Old age pension, family pension, scholarship, compensation for the loss of property due to floods, and all of the above. All of the above, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ठीक है। The basis of distinction between market price and factor cost. एमपी से एफसी पर जाने का है तो माइनस करेंगे एनआईटी, एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। थैंक यू बच्चा पाड़ी, आज यहीं पर रुकते हैं, 4 बजे मिलने वाले हैं अगेन। कितने बजे? 4 बजे, ठीक है। चलिए, सो धन्यवाद बच्चा पार्टी, प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए। आई नो दैट देयर आर मेनी चैलेंजेस इन बिटवीन बट यू हैव टू डू इट। डोंट थिंक अबाउट कि क्या होगा, पेपर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, नहीं पता, नहीं कुछ कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यस, सो ग्रेट, अमेजिंग एवरीवन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट। अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ते रहो एंड फोड़ते रहो, ठीक है।